Welcome to BioRatna. Those of you who are watching my video for the first time, let me introduce myself. I am Chandana Sengupta, having 18 plus years of teaching experience. I am honored to be recognized as Excellent Educationist by HRD Ministry, Government of India. Few of my suggestions have been incorporated in Standard 11th and 12th NCERT Biology. Many of my students have taken admission in government medical colleges, and every session for 12th board I have given my bio toppers with 98 or 99 marks. I am very passionate about my teaching. I love and care for my student. Your aim, your goal to become a doctor, you are naturally very passionate about it. And if you find my videos helpful in achieving your goal, then immediately subscribe and hit the bell icon so that the videos reach you in time. In today's video, we are going to discuss stamen, microsporangia and microsporogenesis. I have not included the formation of mature pollen grains here, as each of the topics require proper attention and time, and including the pollen grains would have increased the time limit of this video. So we start with the first one, that is stamen. The stamen is the male sexual organ of the flower, and this stamen, it has two parts. This is the one long stalk-like, this is the stalk, which is called the filament. This is the filament, and on the top of the filament there are this anther. This anther, this is bilobed. You can see the two lobes. So this is bilobed anther at the top. और यहाँ नीचे में, here it is inserted into the thalamus. Here your NCERT asks you, not 11th, 12th itself. It is asking you, do you remember? It may be attached to some other part also. What is that? Second one, it says the number. The number of stamens, they vary. Do you know that their number vary? Third, the length of the stamens, they also vary in the same flower. So in the same flower, the stamens are of different height. Can you recall? Pause the video for some time, write in the comment box and then come back. These points we have discussed in our first video. Watch that one. So layer by layer, जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी, the gradual building up will be there and you won't have the problem. The answers. The filament may be attached other than thalamus. It may be attached to the petals. Example, brinjal. Then this one I am keeping for the last number. Length of the stamen varies as in the case of salvia and mustard. अब ये number of stamen, आप बोलोगे कि 11th में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि अलग अलग फ्लावर में अलग अलग नंबर होते हैं स्टेमिन का. अगर आप रिकॉल करते हो प्रॉपरली, आप में से कितनों ने कर लिया होगा, स्टडीड द फैमिलीज. Then you studied family. One was Fabaceae. Fabaceae example was P. उसमें आपने देखा था it has 9+1 arrangement. 2 बंडल बनाता है स्टेमेन, 2 बंडल बनाता है, एक 9 स्टेमेन का एक. So here the number is 10. In Fabaceae, number of stamens is 10. Then it was पोटैटो वाला कौन सा था? Solanaceae. So in Solanaceae, for example in potato, do you remember? वो सेपल भी 5, पेटल भी 5 और ये एंथर भी 5. So it is number is 5. And then Liliaceae, जो Liliaceae है, in Liliaceae, for example lily, the number of stamens were 6. Number of stamens were 6. So number of stamens, it varies. चलो आगे बढ़े. अच्छा. So this much you have seen that the anther is bilobed. उसके 2 लोब होते हैं. And it can be very easily seen in case of transverse section. ऐसा एक
ट्रांसवर्सली कट करके आप देखते हो, देन यू विल फाइंड then you will see that this side, यहाँ सेंटर से ये लाइन है ना, this is one anther lobe and this is another anther lobe. So these are the two anther lobes. These two anther lobes, they can be seen in transverse section. Then each anther lobe is dithecous, means each anther lobe is having two theca. इसमें दो थीका है. Not that the anther is dithecous. Each lobe of anther is dithecous. तो पूरे anther में कितने हो गए थीका? 4. 2 in each anther lobe. And inside each theca, there is one microsporangium. Inside each theca, there is one microsporangium. Repeat. Stamen having anther. Anther is bilobed. These are the two lobes. This is one lobe. This is another lobe of the anther. Each lobe has two theca or cavities. Each lobe has, this is 1, this is 2. 2 theca. Inside each theca there is one microsporangium. Microsporangium. So the total number of microsporangia as well as the theca is same. Theca is same. 4 theca, 4 microsporangium. 2 anther lobes, 4 theca, 4 microsporangium, like that. This much I hope you have understood. आगे बढ़ें. These theca which are there, so separating one theca from the other, you can see this longitudinally arising grooves. ये लाइन्स है जो सेपरेट कर रहे हैं एक थीका को दूसरे थीका से. दिस ऑल्सो आर लाइन ऑफ डेहिसेंस. यहाँ से वो फटता भी है टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स. सो दिस इज फिगर 2.2b from NCERT. That is three-dimensional cut section of anther. हो गया. अच्छा, ये यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? दिस इज कनेक्टिव. हियर this is also longitudinally it is going downwards, means नीचे से ये xylem phloem लेके आ रहा है एंथर तक. सेम माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर को रखने वाला बैग, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया. एट मैच्योरिटी इट इज कॉल्ड पोलन सैक. इसी को पोलन सैक कहेंगे कब? When the microspore they get mature and they become pollen grains. Naturally, जब तक माइक्रोस्पोर थे अंदर तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहते थे. जब वो पोलन ग्रेन बन गए then we call it pollen sac. Let us see this magnified view. So structure of microsporangia. उसके लिए पहले TS में पूरे एंथर को बना लेते हैं. So this is the bigger part, the smaller one. Okay, now let us see its structure. The outermost layer is epidermis. This epidermis is continuous throughout. सिर्फ एंथर के एक ही लोब में है, दूसरे में अलग से है. Not like that. This is a continuous layer. This one is epidermis. This one is epidermis. Below it again a continuous layer, and this continuous layer is that of endothecium. So the next layer, this one is endothecium.
व्हाट नेक्स्ट, बीच में मिडिल लेयर्स है, लेकिन शुरू में ही मिडिल लेयर्स बनाओगे देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. फर्स्ट क्या करोगे, ड्रॉ दिस microsporangia. This microsporangia in transverse section is nearly circular. ये एक circular ball like structure है. Here also you draw one, here smaller one, like that you draw the microsporangia. और ये microsporangia के ऊपर एक कवर बना लीजिए. This is the tapetum layer. This is tapetum. और एंडोथेसियम और टैपेटम के बीच की जितनी लेयर्स है, दिस इज वन लेयर और टू लेयर एंड द थर्ड लेयर, दीज लेयर्स दे आर मिडल लेयर्स. सो दिस इज द इजी वे यू कैन अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ. दिस इज मिडल लेयर्स. These three, that is epidermis, endothecium and middle layers, they are protective in nature. इसके अलावा भी उसका और एक पॉइंट है, फंक्शन है. कभी नोटिस किया, NCERT इज ए मैजिकल बुक ना, वही सेम सेंटेंस में लिखा होगा, एक पार्ट आप पढ़ोगे दूसरा आपका माइंड कैच नहीं करेगा. सो वन इज इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. सेकेंड, चलो पहले कमेंट बॉक्स में लिखो. सेकेंड इज दे हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर. एंथर के फटने में मदद करता है टू रिलीज द पोलन ग्रेन्स. सो टू फंक्शंस ऑफ द अपर थ्री लेयर्स, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस. एंड द tapetal layer, but it is different. Structure also, function also. Its cells are multinucleate. उसके सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होती है. एंड इट इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. यहाँ देखो अंदर में ना ढेर सारे सेल्स है with dense cytoplasm, big nucleus, vibrating with life. These cells, they are called microspore mother cell, MMC, or microspore mother cell. And they are the one who will by meiosis are going to form the microspores. वही है जो microspore बनाएंगे और उन्हें न्यूट्रिशन पहुंचाएगा टैपेटम. टैपेटम और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम करता है ना. अगर ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए तो लास्ट में बताएंगे, ठीक है. नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मच पार्ट इन डिटेल. मतलब सारे लेयर्स भी आ जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया का भी मिडल तक सारा आ जाएगा. सो व्हाट वी सी, ये सर्कुलर है. सो वन सर्कुलर आउटलाइन फर्स्ट वी विल ड्रॉ. And the outermost layer, no one's guess, everyone knows that the outermost layer is the epidermis. This epidermis, दोनों same. Below it, another layer, continuous layer. This layer is called endothecium. So this is endothecium here. Below it, the middle layers are there. But what I told you, पहले ये tapetum वाला बना लो. So draw a circular structure and the tapetal cells. कोई दूसरा कलर दे दें. The tapetal cells. These tapetal cells are multinucleate and they are nutritive in function. They have more than one nuclei in them. So this is tapetum. और यहाँ टैपेटम और एंडोथेसियम के बीच की जगह को भर दीजिए मिडिल लेयर से. चलिए 3 बना लेते हैं, 1 2 3. 1 2 and this one, the third one. So these are the middle layers. And this inner side of the tapetum in the sporangia are present the microspore mother cells. Big cells, dense cytoplasm, big nucleus. They are ready to do the next job required for the reproduction. This much clear? ये डायग्राम बन गई.
दिस इज द डायग्राम 2.3 फ्रॉम एनसीईआरटी। 2.3 का ये जो डायग्राम है दिस इज ऑफ इमैच्योर एंथर। ये इमैच्योर एंथर के अंदर हम इमैच्योर दिखा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? पहले तो यहाँ एमएमसी है, मैच्योर में अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। दूसरा, मैच्योर वाले में ये वाली वॉल जो है वो फट जाती है एंड इट रिलीजेस द पोलन ग्रेन्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स थे, दे आर ऑल द पोटेंशियल एमसीक्यूज, बट वन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, हाउ द टैपेटल सेल्स हैव बिकम मल्टीन्यूक्लिएट। सोच के बताओ, सोचना तो पड़ेगा ना, पहले सोचिए उसके बाद बताते हैं, ठीक है? अच्छा, और जो मैच्योर वाला है ना 3.3C वाला डायग्राम, दैट इज दैट ऑफ मैच्योर वन। तो मैच्योर वाले का डायग्राम बनाने का आसान तरीका ये है, दिस आउटर बाउंड्री यू आर गोइंग टू ड्रॉ एनीवे। उसके बाद यहाँ एक ओम जैसा स्ट्रक्चर बनाइए, दिस साइड ऑल्सो यू ड्रॉ वन उल्टा ओम, और बस बन गया आपका। This is the mature anther which has burst open to release the pollen grains. These one, they are no more microspores, they are the pollen grains. और यहाँ पे जहाँ पे फटा है यहाँ पे these are some special cells are there. यहाँ थोड़े ऐसे special cells बना दीजिए, आपका ये वाला तैयार हो जाता है। Here you show the connective, that's it. And the epidermis and other layers are understood there. Now we see microsporogenesis. Microsporogenesis, you have seen that inside the microsporangia which cell is present? Microspore mother cell, इसको बनाने वाला mother cell. Now what is the definition of microsporogenesis? The formation of microspores from the diploid microspore mother cells by the process of meiosis is called microsporogenesis. वेरी सिंपल प्रोसेस। ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड, इट अंडरगोज meiosis 1 to form 2 cells, this again undergoes meiosis 2 to form the 4 cells. These 4 cells are still joined to each other and these are called the tetrads. These are the tetrads of microspore. 1, 2, 3, 4. These are the tetrads of microspore. एक फंक्शन बता ही दूँ आपको, टैपेटम का जो बोला था, दिस माइक्रोस्पोर्स दे आर अटैच टू ईच अदर ना, एक दूसरे से रिलीज नहीं हो रहे हैं कि पता नहीं क्या डर है, अब पता नहीं आगे क्या है, एक दूसरे को पकड़े रहो भैया। So this tapetum, it releases a enzyme which tells them to separate, कि चलो भैया को डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाने हैं। That is another function of tapetum. This way, these microspores are formed and many microspores are formed in each anther. जितने microspore mother cell है, each and every one will undergo meiosis. Each one will form 4 microspores. So naturally, so why the number is so large? Why they are formed in such a large number? Because during pollination, their fate is very uncertain. Very few of them survive. That's why they are formed in such a large number. So that is all about stamen. समझ में आ गया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर का माइक्रोस्पोर को रखने वाला सैक, and microsporogenesis, process of formation of microspore. If you have liked my video, please do subscribe and hit the bell icon. All the best for huge knowledge and success and happiness.